आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं रतन टाटा की कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। रतन टाटा का जन्म कब हुआ, रतन टाटा की डेथ हाल ही हुई है तो हम सबको ये पता है कि वो गुजर चुके। कितने सेगमेंट्स के अंदर ये वर्क कर रहे थे और उन्होंने दुनिया के लिए क्या क्या किया है, ये सारी चीजों को यहाँ पे हम जानने वाले हैं। और ये एक ऐसे महान इंसान थे कि जिनकी वजह से आज दुनिया बहुत उनका शुक्रिया अदा मान रही है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हर एक की लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल निभा रही है, राइट। हमारे घर के अंदर एसी इसको ले लो, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो टाटा कंपनी रन कर रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर टाटा एवरग्रीन रहा है, बहुत सारे एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी टाटा की प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी जगह पे टाटा की प्रोडक्ट्स है जो हम एवरीडे लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच की वजह से और उनके एस्थेटिक, इनके रूल्स। यानी ये इतने डाउन टू अर्थ इंसान थे कि कहीं भी, बहुत सारे बिजनेसमैन की स्टोरी उठा के देख लो, सब जगह पे आपको कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेसमैन के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज मिलेगी। ये एक ऐसे इंसान थे जिनके बारे में नेगेटिविटी भी नहीं देखने मिलेगी। हाँ, इनके यहाँ पे जो टाटा की होटल से उसके गेट के बाहर भी कोई कुत्ता भी आता है तो वहां क्या सिक्योरिटी गार्ड उनको हटा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि रतन टाटा जी का ऑर्डर था कि कुत्ता भी अगर हमारे दरबार के ऊपर आता है तो उनको भी आपको भगाना नहीं है, उनको भी उसी तरह ट्रीट करना है, उतनी ही प्यार से उनसे कुछ नहीं करना है और उसको एज इट इज रहने देना है। ये रतन टाटा जी के विचार थे और बहुत सारे लोगों को ये विचार से उन्होंने जोड़ दिया था। बहुत ही डाउन टू अर्थ थे ना, उन्होंने शादी की है और बहुत सारे ऐसे काम किया है, बहुत सारे लोगों को डोनेशन दिया है, बहुत सारी ऐसी ट्रस्ट बनाए हैं जिनके थ्रू बहुत सारे लोग कैंसर की और ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी उसकी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फिर नॉमिनल कॉस्ट के अंदर वो लोग ले पाते थे। तो रतन टाटा जी को दिल से सैल्यूट। अब चलते हैं रतन टाटा जी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसको हम जानने वाले हैं। चलिए, रतन टाटा जी की जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को, बॉम्बे के अंदर इनका जन्म हुआ था, राइट। और उनका 86 हाल ही 9 अक्टूबर को उनका डेट हो चुका है, राइट। इंडियन इंडिया के अंदर रहते थे और कहीं भी बहुत सारी जगह पे उन्होंने स्टडीज किया, बहुत कुछ किया, हार्डवर्क के अंदर बिजनेस सीखा, राइट। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज की। प्योर नॉन वेजिटेरियन यानी शुद्ध शाकाहारी खुराक लेते थे और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान थे। पद्म भूषण का अवार्ड उनको पहली बार 2000 के मिला और दूसरी बार पद्म भूषण का अवार्ड 2008 की मिला। और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिन्होंने उन्होंने अचीव किए। और बिजनेस को लेके उनका एक ही मोरल था, अगर कस्टमर को कुछ चीज देना है तो उससे ज्यादा उसको उनकी वैल्यू देना है, राइट। और इतनी ट्रस्ट, बाकी सारी कंपनीज को देख लो और टाटा की बात आती है तो टाटा यानी भरोसा, सीधा। और हर एक इंसान के अंदर, दिल के अंदर एक ही आवाज आती है, टाटा यानी ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी भरोसा। एक ही चीज नाम मुंह पे आती है, टाटा यानी ट्रस्ट। हर एक इंसान इंडिया के अंदर जो इंसान भी टाटा के बारे में जानता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज उनके बारे पे आती है, मुंह पे आती है, टाटा, दैट मीन्स ट्रस्ट। आप भरोसे पे पैसा लगा रहे हो, आपका भरोसा कभी टूटेगा नहीं, ना उन्होंने कभी तोड़ा है। कहीं पे भी उनके खिलाफ आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, टाटा की रिव्यूज के अंदर जाके देख लेना, कहीं पे भी आपको सिंगल नेगेटिव रिव्यूज देखने मिलेंगे। दिस इज हिस्ट्री इन दिस वर्ल्ड, राइट। आप बहुत सारे बिजनेस को सर्च कर लोगे, आपको नेगेटिव रिव्यू मिले ही मिलेंगे, लेकिन टाटा के बारे में नेगेटिव रिव्यू आपको बहुत ही रेयर मिलने वाले हैं। पीएम के साथ जितने भी अपकमिंग लीडर्स आए हैं उन सब ने टाटा को सराहा है कि टाटा यानी ट्रस्ट, इनके साथ काम करना यानी आप एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ रहे हो जो आपको बहुत ही आगे ले जाने वाला है। और उनका एक ही मोटो रहा है, एक ही मोटो रहा है कि जितना कमाओ उससे ज्यादा उतना डोनेशन करो। 80% 70% वो अपने डोनेशन कर देते थे, जितना प्रॉफिटेबिलिटी होती थी उतना डोनेट कर देते थे उनके। अब यहाँ पे बात आती है, अब टाटा कंपनी को कौन रन करने वाला है। ये उनके पिताजी का फोटो है, नवल टाटा जी, और उनकी मदर का एक फोटो है, सोनी कमिश्मेंट, राइट। और उनकी एक एक्ट्रेस भी थी, इनकी एक अफेयर्स भी हुआ करता था। ये एक्टर्स है, एक्टर्स के साथ 3-4 बार सीरियस अफेयर्स भी हुए थे लेकिन मैरिज नहीं किए। सैमी गेरे वाली एक्ट्रेस, आप इसको जाके सर्च कर सकते हो, टाटा जी के जीवन का ये सर्च है। सैमी गेरे वाली एक्ट्रेस के साथ उनका अफेयर्स भी हुआ था, 4 टाइम सीरियस रिलेशनशिप जैसा भी हुआ था, लेकिन मैरिज उन्होंने नहीं किया था, राइट। उनके ब्रदर है, टाटा जी के ब्रदर हैं,
ये जिम्मी टाटा है। जिम्मी टाटा यानी नवल टाटा जी, जब नवल टाटा जी की वाइफ जब नहीं रही थी तब उन्होंने दूसरी शादी की थी, और दूसरी शादी के बाद उनका एक छोटा भाई हुआ था। इनका नाम था जिम्मी टाटा, राइट। ये जिम्मी टाटा इनके ब्रदर्स है। उनकी वाइफ और उनकी बेटी है, तीन बेटी और जिम्मी टाटा की बेटी और उनकी वाइफ है, जो अब जिम्मी टाटा, ये सारी टाटा कंपनी अब चलाने वाले हैं जिम्मी टाटा। क्योंकि नवल रतन टाटा जी की कोई वाइफ नहीं थी, ना उनका कोई बच्चा था, तो पूरा टाटा ट्रस्ट, पूरा टाटा के जितने भी सेक्टर्स है, सब कुछ है, वो जिम्मी टाटा के पास जाने वाला है। अब से टाटा कंपनी को रन करने वाले जो इंसान है वो जिम्मी टाटा है, राइट। टाटा जी के जितने भी बिजनेस है, टाटा जीआरडी, टाटा जी रिबॉन, टाटा जितने भी बहुत सारे जितने भी है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे थे। और ही इज द वन पर्सन जिन्होंने हकीकत में देखा है, सीखा है, और बहुत सारे लोगों को सहारा भी दिया है, और उनके लिए यूथ आइकॉन रहे हैं। बहुत सारे लोगों के आइडल, बिजनेसमैन के आइडल रहे। अगर बनना है तो टाटा जी के जैसा बनना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने छोटे आदमी के लिए नैनो कार भी रचना की थी, टाटा नैनो। ये अलग बात है कि टाटा नैनो मार्केट के अंदर रन नहीं हुई, लेकिन एक बिजनेस माइंड होने के बाद एक छोटे इंसान के बारे में इतना कुछ सोचना कि जहाँ पे एक इंसान बाइक के लिए जो पे कर रहा है उसी प्राइस के अंदर उनको कार की अफोर्डेबिलिटी दी, कि आप आपके परिवार को कार के अंदर लेके घूम सकते हो इतने ही प्राइस के अंदर। और इन्होंने बहुत ही अच्छा लोगों के लिए काम भी किया है, चैरिटेबल ट्रस्ट भी किया है, और बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इनका बहुत ही अच्छा रोल मॉडल रहा है। और जहां पे भी आप उनके एम्प्लॉयज से लेके आप उनके मैनेजर तक चले जाओ, कहीं पे भी आपको रतन टाटा के बारे में नेगेटिव रिव्यू नहीं देखने मिलेंगे। और उनका एक ही रोल मॉडल रहा है अमेरिका की ट्रैवल। अमेरिका, अमेरिका के अंदर भी इनकी ये फोटो ली गई थी। बहुत ही अच्छा रतन टाटा जी के बारे में लिखा गया है कि ही इज द पर्सन जो रियली जैम है, राइट। बहुत सारी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह पे मैं एक वीडियोस भी यहाँ पे छोटा सा प्ले करने वाला हूँ, जिसके अंदर टाटा जी के बारे में क्या क्या वर्क कर रहे हैं, कौन से सेगमेंट्स के अंदर ये वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, जिसके बारे में बहुत ही जानना जरूरी है। लेट्स सी, हम उस वीडियोस पे चलते हैं और उस वीडियोस को देखते हैं। उस वीडियोस को देखते हैं कि कैसे रतन टाटा जी के बारे में। बॉम्बे हाउस। This is a simple looking head office of the Tata Group in Mumbai, India. But Tata Group is anything but simple. Started as a small trading company by Jamshedji Tata in 1868, Tata Group now has more employees than Toyota, Coke, Facebook, Microsoft, and Google combined. It now operates in over 100 countries. So let's tighten our seatbelts and take a world tour to witness the remarkable business empire of Tata Group. Our first stop is North America. Here Tata Group owns the luxury hotel Taj Campton Palace in San Francisco, Taj Boston, and one of the world's finest and New York's iconic hotel, The Pier. Tata's Tetley Tea is the second largest tea company in US and largest in Canada. They also own popular brands like Good Earth and America's third largest coffee company, 8 O'Clock Coffee. Tata's IT service company, TCS, operates 24 offices in North America. And while their animation and design lab, Tata Elixir, also operates in 8+ locations in the region. In manufacturing sector, the group operates a soda ash mining company in Wyoming, iron ore mining company in Quebec, Canada, steel manufacturing facilities in Ohio and Pennsylvania, and also a coffee production plant. In all, Tata Group employs over 20,000 people in North America, about 3 times more than how many people Microsoft employs in India. Now let's travel to South America. TCS employs more than 8,000 people in 8 countries in South America. The group is also an investor in the first submarine fiber cable network between US and Brazil. Tata has also owned world's largest subsea fiber cable network. Today, 25% of world's internet routes travel over Tata's subsea networks. From South America, let's travel to Africa and land in the port city of South Africa, Cape Town. Here, Tata Group owns the historic luxury hotel
Taj Cape Town. In nearby Zambia, they own Taj Pamodzi, one of the most luxurious hotels of the country. Tatas also operate 2 wind farms in South Africa and a hydroelectric power project in Zambia. The group also owns Jokels, South Africa's 3rd largest tea company. Tata trucks and buses are one of the top sellers in Zambia, South Africa, and Kenya. In manufacturing sector, Tata owns a chemical plant in Magadi, Kenya, which is Africa's largest soda ash manufacturer, commercial vehicle assembly plant, and a steel plant in South Africa, and finally a manufacturing and a power plant in Mozambique. From Mozambique, we will move to London, Buckingham Palace, Queen's official residence. Close to the palace, Tatas own the luxurious Taj 51 Buckingham Gate Suites. The hotel also has the world's first Jaguar suite for all the Jaguar lovers. Nearby, the St. James Court Hotel is also owned by the group. Tata's Tetley is the largest tea company in the UK. Their other European tea brands include Vitex, a popular brand in Poland, Jemka, the market leader in Czech Republic, and Grand, a coffee brand in Russia. Tata Steel is one of Europe's largest steel maker, and TCS has been awarded as the best employer in Europe. Jaguar Land Rover is also owned by Tatas and is the largest manufacturer of premium vehicles in Britain. The group also operates design centers in London and Paris, and one of the world's largest e-learning company in UK, Germany, and Switzerland. Tata employs around 60,000 people in Europe and is also UK's biggest industrial employer. To end it all, Tatas also own a relatively small company called British Salt in the UK. An Indian company owns British Salt. Quite ironic if one remembers Gandhi's Salt March carried out against the British Raj only 88 years ago. Now let's travel all the way to Sydney, Australia. Here in Sydney, TCS began its first operations in Australia, and now the company operates across Australia and New Zealand with over 10,000 employees and clients like Qantas, Telstra, and Commonwealth Bank. Tatas also own popular Australian coffee machine brand MAP and operate data centers across Australia through their partnership with NextDC. The group also holds stake in Scarborough Downs coal project in Queensland, Australia. Finally, we have reached Asia. Let's start in the desert sands of the Middle East. Tata's Range Rover is one of the most sought after four-wheel drives in the region. Tata Motors is also a leader in the medium and heavy commercial vehicle segment in GCC countries, while TCS has multiple offices in the Middle East, including an all-women IT services center in Riyadh, Saudi Arabia. The group also owns Titan watches, a leading brand in Oman and Bahrain. They also own a logistics company in UAE and the luxurious city hotel Taj Dubai near popular landmarks like Palm Jumeirah. Finally, Voltas, Tata's leading air conditioning brand, has completed major mechanical and air conditioning projects that include Burj Khalifa, Dubai, international airports in UAE and Bahrain, Ferrari Experience, and F1 racetrack in Abu Dhabi. Southeast Asia. From deserts of UAE, we will move to South Korea. Here, Tata owns South Korea's second largest heavy commercial vehicle manufacturer, Tata Daewoo. In Singapore, Tata's steel plant is the largest single cut and bent steel operations worldwide, while the group is also the largest producer of long steel products in Thailand. Tatas also own stake in oil and gas blocks and coal reserves in Indonesia and are developing power generation projects in Myanmar and Vietnam, and even operate a life sciences research company and own plantations in Singapore and Indonesia. Even Tata's Voltas has executed engineering projects like New Hong Kong International Airport and Cyberport Business Park in Hong Kong.
China. Here, TCS has 6 global delivery centers, Tata's own 2 rolling mills, a refractories factory, an auto parts factory, green tea manufacturing plant, and also have a Jaguar Land Rover assembly plant. We have reached South Asia, the beautiful and scenic Maldives. Here we will find the lush Taj Coral Reef with white sands and scenic view. Moving ahead to Sri Lanka, Taj owns the picturesque Taj Bentota and 2 more hotels in Colombo. Tatas also provide telecommunication services in Nepal and Sri Lanka and have even deployed a hydro project in Bhutan. After our long world tour, we have finally reached India. Here, TCS is the largest Indian company. TCS becomes the first Indian company to hit $100 billion in market cap. Tata Motors is a leader in commercial vehicles segment. Titan Company is India's largest manufacturer of branded watches. Tatas also run largest jewelry store chain Tanishq. While their Tata Power is India's largest integrated power company. Tatas also own steel plants, tea plantations, automobile manufacturing units, chemical factories, and even own mobile networks and DTH company Tata Sky. Not only that, they operate airline Vistara and also manufacture defense helicopters and equipments. Even Starbucks in India is jointly owned by the Tatas. Tata has not only created a massive business empire, but also multiple social institutions like cancer treatment centers, mathematics and science research institutes, and also the first planned industrial city of India, Jamshedpur. 66% of the group shares are held by a charity trust. Across the world, the company has been involved in multiple social programs. Tata is truly an incredible company and has traveled a long way from Mumbai to be now present all across the world. All I can say is, this is Tata's business empire. आपने देखा टाटा इतनी सारी जगह पे वर्क कर रही है और रिटेल से लेके अमीर तक सारी कैटेगरीज की प्रोडक्ट और ऑल ओवर द वर्ल्ड 100 कंट्रीज के अंदर टाटा ने अपना डंका लहरा दिया है। ये है टाटा ग्रुप की कहानी। ये सारी नेटवर्क अब जाने वाली है उनके भाई जिनके पास ये सारा ऑपरेशन होने वाला है। अब टाटा कंपनी के चेयरमैन होने वाला है उनके भाई जिम्मी टाटा, जो जिम्मी टाटा की वाइफ और उनकी बेटी, ये तीनों लोग अब टाटा कंपनीज के ओनर्स रहने वाले हैं। और 66% ऑफ स्टेक टाटा के अंदर ट्रस्ट का है, रिटेल चैरिटी ट्रस्ट का पैसा है। और 80% जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उनका 80% ये इंसान डोनेशन करते थे। अब जानने की बात है, अब आगे वाले दिनों के अंदर क्या टाटा का भरोसा पहले जैसा रहने वाला है या टाटा के अंदर चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेस के अंदर जब एक नए एंटरप्रेन्योर एंटर्स होते हैं तो उनकी थॉट्स अलग होती है, उनकी विचार शक्ति अलग होती है, उनके बिजनेस एथिक्स अलग होते हैं, सारी चीजें डिफरेंस होती है। अब ये आने वाला समय बताने वाला है कि टाटा कंपनी वही भरोसा लोगों का जीत पाएगी या नहीं पाएगी। आपकी क्या राय है? आपकी क्या कमेंट है कि टाटा पहले जैसा भरोसा टाटा के ऊपर रहने वाला है या कुछ नया बदलाव आने देखने मिलने वाला है? कमेंट में जरूर बताएगा। और इस वीडियो को बिना भूले लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको टाटा कंपनी की वेल्थ के बारे में नहीं पता था।